Good morning guys, me Mohit Sharma back again with our last continued video of integer as a online classes of BPS convent school. I hope guys you got my work, you got my effort, you got my tricks and you have done the homework of the remaining questions. As you know guys that we have done we are going to start our chapter number first A and we have done at least 4 questions that are 1, 2, 3 and 4 questions. I hope you got all the tricks of given by me and you have done the homework. Okay guys, now we are going to start our 5th question of this chapter. So should we start our 5th question? Okay, now start. Okay student, now we are going to start our 5th question. Look at one thing, these all questions are from 7th class and the book name is R.S. Agarwal Private Publications. Okay, and that is question is on page number 5. Look at student, what are questions saying? That is subtract the sum of minus 1032, it means 1032 and 878, it means 878 from minus 34. Look at student, what we are to do? First we are to do the sum of minus 1032, 1032 and 878. First we have to do the sum of these two numbers. Okay, then whatever we have got, we are to subtract that number, whatever we have got from this sum. Okay, that numbers we want to subtract that number by minus 34. So should we start? Look at guys, for the solution what we are to do, first we have to do the sum of minus 1032 and 878. Then look at first by the questions we have to do the sum of minus 1032 and 878. Then look at sum of minus 1032 and 878. Now look at minus 1032 and plus 878. Now look at guys, we are doing the rough work is here. Now look at 1032 and 878. What I said at in the last video, that when we have one number is of minus and one number is of positive number and one is of negative number, then what we are to do? First we take the sign of the big number and then subtract the both of the number. Okay, now look at 8 plus 4 12. Now here we have 12 7 5 we got. Here we have 9 minus 8 154. That is of minus. Check our sum, that is 8 plus 4 12, 1 carry 7 plus 5 12, 12 plus 1 13, 1 carry 8 plus 1 9, 9 plus 1 10, that is of right. Okay, then we got is equal minus 154. Now what we are to do? Subtract. Now subtract minus 154 from minus 34. Now what we are to do? Subtract. We are to subtract minus 154 from 34. What I said at the last video, that when we have this kind of position, this kind of form, that when we have something from, when we have something before from, okay, then we place at the end, and whatever we have there after from, that we take the first step. Okay, then what we are to do? First minus 34. देखो अपने को क्या लेना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि जो भी फ्रॉम के बाद में आता है वो अपने को लेना सबसे पहले, फिर फ्रॉम की जगह माइनस का साइन और उसके बाद में जो पहले लिया हुआ उसको क्या लेना है लास्ट में. तो देखो फ्रॉम की जगह अपन ने लिया माइनस साइन एंड हियर वी हैव minus 154. Here we have minus 154. Now look at guys, what we are to do, as I said at the last video, that जब अपने पास क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर की साइड में माइनस का साइन होता है, अंदर की साइड में माइनस का साइन होता है, तो क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है. मल्टीप्लाई करने में मैंने क्या बताया कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस आएगा. तो देखो minus 34 plus 154. Again we have to do the rough work. So look at 154 minus 34. 4 minus 4 0, 15 minus 3 12 है, minus 120 that plus 120 is equal 120 is the
answer. That is our answer. I think you got the answer. Look at how we do. First we have to subtract the sum of these two number. अपने को इन दोनों नंबरों का सम करना था. उसके बाद में क्या है, सब्ट्रैक्ट किसमें से करना है, फ्रॉम दिस, इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है. इसका मतलब ये तो पहले आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इन दोनों का जो भी सम आएगा वो आएगा. अपन ने इन दोनों का सम निकाला, दोनों का सम आया -154. 154 को क्या किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया. वी हैव गॉट -34 माइनस इंटू -154. माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस आया. फिर अपन ने प्लस को मल्टीप्लाई करके 154 में से 34 माइनस किया, तो अपने पास क्या बचा, 120 इज द करेक्ट आंसर. शुड वी मूव थ्रू द सिक्स्थ क्वेश्चन. Guys, now look at our sixth question is as same like fifth question. We have to first we have to do the sum of these two any two number, and then we have to subtract from any number. Okay, then sixth question you do on your own. Now we move through to seventh question. Look at the seventh question. Seventh question is fill in the blanks. We have to do the fill the blanks. Okay guys, now look at the what our first question says. Our first question is -13 plus 27 plus -41 is equal to -13 plus 27 plus something. Then what comes at the this blank? Okay, now look at guys, if we give, look at the solution. If we give name to these numbers like -13 we give A, then plus 27 to we give B, then plus -47 to C. Now look at here we have -13 we have to give the number A plus middle bracket 27 to have we have given B plus what comes here. Now look at guys, check your mind that we have a property of these integers that are associative property, that is associative property. What this property says, ये प्रॉपर्टी अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है. ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी क्या हो a प्लस बी ऐसे ब्रैकेट में और उनके साथ कोई नया नंबर c जुड़ रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा कि a के अंदर जब बाकी के बचे हुए दो नंबरों को ऐड करेंगे ना, तो वो क्या आ जाएंगे, सारे के सारे सेम आ जाएंगे. तो यहाँ पे अपने को देखो a आ गया, b आ गया, इसमें क्या ऐड करेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएगा. कब होंगे इक्वल, जब यहाँ c आएगा तभी तो होगा ना. तो अपने को यहाँ पे क्या रखना होगा, c रखना होगा. तो देखो गाइस, अपन ने यहाँ पे क्या रख दिया, c रख दिया. अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों सेम है, a प्लस बी प्लस सी तीनों सेम है. ऐसे ही यहाँ पे होगा. तो देखो गाइस, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. तो देखो a प्लस बी प्लस सी हो गया. अब a प्लस बी प्लस सी आएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, -41. तो अपने यहाँ पे क्या रख देंगे, -41. तो आंसर इज -41. You got the answer? Now look at the second question. Okay guys, move through the third question. What third question say, 53 plus -37 is equal to -37 plus 4 number. We have to fill the blanks. Now look at guys, again we replace that number by alphabets. Look at 53 we suppose that is the A, and -37 we suppose plus B. Now look at is equal to, here we have -37, what we measure, B plus what comes here. Now look at guys, A plus B, A के अंदर अपन क्या जोड़ रहे हैं, B को जोड़ रहे हैं. तो B के अंदर क्या जोड़ेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. A को जोड़ेंगे, ऑब्वियस बात है A को जोड़ेंगे ना. तो यहाँ पे अपन A रख लेंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा. ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो देखो ये कहलाती है अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये कहलाती है अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो देखो यहाँ पे आंसर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे -37, यहाँ पे भी -37, इक्वल करना है तो 53 है. इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 53. अब क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए. किससे हो गए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से. तो आंसर क्या आ जाएगा, 53. यू गॉट द आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Guys, now move through the seventh, sixth and seventh question. First we have to move to sixth question. Look at guys, we have the minus sign is here, and in the bracket -83, and what comes in the blanks. Now look at guys, we have the minus before the bracket and after the bracket. So then we have to do the multiplication of these two minus sign, and we know that minus multiply minus is equal to plus. Then we have here plus 83. This is the
answer, and it known as the additive inverse. Additive identity. This called additive आइडेंटिटी, कि जब भी अपन के दो साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, जो सिमिलर साइन होते हैं वो क्या देते हैं, प्लस साइन देते हैं, और ये निकाल के लेके आता है प्लस 83. तो ये क्या हो गई अपनी एडिटिव आइडेंटिटी. नाउ मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन. व्हाट सेवंथ क्वेश्चन से दैट -60 what we minus from -60 to get -59. So look at guys, here we have measured that. Here we have x, here we have x. Now look at -60 minus x is equal to -59. -60 minus x is equal to -59. Now look at transpose this -60 to after the equal sign, then minus x is equal to -59 plus 60. -59 plus 60. Now look at guys, here we have minus x is equal to 60 minus 59, 1. Here we have 1. Now multiply by x is equal to 1. How? When we multiply this equation by minus sign, then we get x बराबर s equal to minus sign. This is the answer. You got the answer. Move to the next question. Now look at guys, we have to move to eighth question. What eighth question say? That is of simplify. Now look at guys, if we want to solve the simplify, then look at what is the question. We have a bracket, then we have the minus sign, and then the 13, minus 13, again minus bracket minus 27, and both the bracket middle and small bracket and middle bracket close. Then we have the plus sign, again we have the middle bracket minus 25 minus small bracket minus 40 close middle bracket and small bracket. Now look at guys, if we have this kind of question, then how we solve? First we solve this question and then this equation, and then we solve this equation, and then we add both of them. Now look at, first we solve them, then first middle bracket minus 13. Now look at guys, here we have minus sign, and again we have the minus sign. As I told you earlier that when we have a bracket and before that and after that there is minus sign or plus any sign, then we have to multiply them. And we also know that we have if we have multiply minus to minus, then we got the plus. Okay, then here we have plus, here we have plus, and then we have the 27 and middle bracket close. Here we have the plus sign as we have in the question. Now again the middle bracket, then minus 25. Again look at here, minus sign, and minus sign is also here. Minus multiplied by minus is equal to plus. Here we have 40 middle bracket close. Now look at guys, minus 13 and plus 27. What is the big number? Plus sign. Then here we have plus sign. If we write here, then okay, otherwise no need for plus sign. 27 minus 13. What we got? 7 minus 3, 4, 2 minus 1, 1. 14. 14 plus 19 is equal to 27. We got 14. Again, look at there. 40 minus 25. It means 10 minus 5, 5. 4 minus 2, 2. 25. Now just simple thing is there. Just add them. 14 plus 25 is equal to 5 plus 4, 9. 2 plus 1, 3. 39 is our answer. That is the answer. Move to the next question. Okay student, ninth question is as same like the 8th question. Move to the 10th question. What is 10th question says? If a is equal to minus 8, if a is equal to minus 8, b is equal to minus 7, c is equal to 6, then we have to verify that a plus b plus c is equal to a plus b plus c. Look at guys, where you was looked at that a plus b plus c is equal to a plus b plus c in the associative property. Now look at, first we write this a plus b plus c is equal to a plus b plus c. Okay, now take the left hand side, LHS, left hand side, a plus b plus c is equal to, now look at the place of a we put minus 8 plus,
At the place of b minus 7. Put in the middle bracket plus c is equal to 6. Put here 6. Now look at minus 8 plus into minus. Minus. When we have the different sign, then we have the minus sign. Minus 7 plus 6. Look at minus 8 minus 7. Minus 15, I told you na. Then when we have the similar number and we have to add them, then first take that whatever is number, the sign is given there, place that sign and add both of the number. Now look at, here we have the minus sign, we place minus sign is here, add plus 7, 15 plus 6 is equal to minus के 9. Look at guys, कैसे किया अपन ने, माइनस 8 अपने ए की जगह माइनस 8 रख दिया, बी की जगह माइनस 7 रख दिया, सी की जगह 6 रख दिया. अब क्या किया है, माइनस 8 और माइनस 7 में देखो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन आता है. उसके बाद माइनस को 8 को माइनस के 7 में ऐड करेंगे तो माइनस के 15 आएंगे, माइनस के 15 में प्लस के 6 ऐड करेंगे तो क्या आएंगे, माइनस के 9. क्यों आएंगे माइनस, क्योंकि माइनस का साइन क्या है, बड़ा है. ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ लुक एट RHS, right hand side. Now take the right hand side, a plus b plus c. Look at minus 8 plus minus 7 plus 6. Minus 8 plus minus 7 plus 6. Now look at guys, minus 8 plus minus 7 plus 6, 1, whatever, minus 1 is equal, minus 8 minus 1 is equal to minus k 9. That is also question number second. Now look at, by equation first and equation second, LHS is equal to RHS. देखो LHS में माइनस 9 आ रहा है और RHS में भी माइनस 9 आ रहा है. LHS is equal to RHS, it means a plus b plus c is equal to a plus b plus c, and this property called associativity. This called associativity property. Okay, this is the 10th question. Move to the next question. Look at guys, 11th question is as same like this question, but this is of commutative property. So you do that on your own. Now we have to move through the 11th question. Now look at guys, what our question says, that is of 12th question, that says that the sum of two integers is minus 16. अपने को क्या दे दिया, अपने को क्वेश्चन दिया है कि दो अपने पास इंटीजर है, उन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 16 आएगा. इफ वन ऑफ देम इज 53, अगर उन दोनों में से ना दो इंटीजर लिए थे, उन दोनों में से एक क्या है, 53 है, तो फाइंड द अदर. अपने को दूसरा फाइंड करना है. तो नाउ लुक एट गाइस, इन द सॉल्यूशन फर्स्ट वी हैव टू प्लेस दीज टू इंटीजर. सो the sum of two integers is minus 16. So x plus y is equal to minus 16. अपन ने दो मेजर क्या कर लिए, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, और अपन ने क्या कर लिया, दोनों का सम किया तो क्या है, माइनस के 16. इफ वन ऑफ देम इज 53, सो बाय क्वेश्चन वन ऑफ द इंटीजर इज 53. तो नाउ वी हैव मेजर y to 53. Look at x plus 53. अपन ने y की जगह क्या मान लिया, 53 मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों में से कोई एक, चाहे y मान लो चाहे x मान लो, आपकी मर्जी है. ठीक है, अपन ने y की जगह क्या मान लिया, 53 मान लिया. देन वी हैव माइनस 16. लुक एट गाइस, x अपन को क्या करना है, 53 को उधर ट्रांसपोज कर दो, इसको इधर ट्रांसपोज किया, क्या है अपना x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस के उधर जाके माइनस का, माइनस के 53. व्हाट इज द आंसर, माइनस माइनस है, दोनों में माइनस आएगा तो माइनस आएगा. 6 plus 3 9 and 5 plus 1 6. 69 is the answer. Then the second integer is minus 69. Move to the next question. Now move to the 14th question. What 14th question says, the difference of an integer.
अपने को एक इंटीजर दे दिया क्या कि a है, कोई इंटीजर a है, इनका डिफरेंस किनका a and -6 is 4, find the value of a. Now look at guys in solution, just simple question is there, as given in question a -6, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 4 आ रहा है। देखो a माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 4, ट्रांसपोज दिस 6 टू अदर साइड, a इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस के 2, दैट इज द आंसर। अपने को क्या करना था कि a और -6 का डिफरेंस दे रखा था, डिफरेंस के लिए अपन ने माइनस का साइन लगा दिया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस आया, प्लस के साइन को उधर लेके गए, माइनस का हुआ, माइनस का 6 हुआ, a इज इक्वल टू 4 माइनस 6 करेंगे, माइनस का 2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ लुक एट गाइस, we have the question number we have done the question number till 14. Now we have the 15th and 16th questions that are so easy question, that is of true false and the simple example of the properties. Okay guys, now we have completed the chapter number first a, we have completed the first chapter number first a. Remaining question you have to do on your own as similar like the further question. Now look at guys, one other thing is there, that as I told you at the last of the last video, that is of my channel, YouTube channel, that is of Let's Play Maths with Mohit sir, that is of Let's Play Maths with Mohit sir. Now look at guys, this is my channel at YouTube. If you prefer this channel, then you find such a good tricks of the maths on the related topic of the given topics. Okay, now just search Let's Play Maths with Mohit sir in YouTube and you find my channel. That is first watch the video, like, share and सब्सक्राइब। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, जय हिंद।